Hello once again everyone present here. As you know that I had already begun the chapter Nationalism in India and I had discussed with you first of all the impact of First World War on India in terms of social and political setup, and we had noticed that how the British government in backdrop of increase in war expenditure increased the custom duties, introduced a new income tax. Then there was done forced recruitment of the Indian people to participate on the side of the Britishers in First World War. Then there was also crop failures and spread of epidemic influenza, and millions of people had lost their lives. So, what were the political and social scenario were created in India in backdrop of the First World War? Then we discussed that after returning from South Africa in January 1915, Mahatma Gandhi entered into the scene of Indian freedom struggle, and he introduced a very novel method of mass agitation that is known as Satyagraha. And I had already discussed with you what was the meaning of Satyagraha. It was the method of agitation against your oppressor based on truth and non-violence. It means if you have to fight against your oppressor, there is no need to be being oppressive and using any physical force. You have to just hold on the truth and make appeal to the consciousness of your oppressor to realize the fact that whatever the misdeed and wrong act is doing against you, it is totally unhuman. And once he realizes the fact, then he will withdraw back his wrongdoing against you, and the truth will ultimately get triumph, or there will be the triumph of the truth. And Mahatma Gandhi had already utilized the Satyagraha in South Africa, and he successfully organized Satyagraha in initial stage at three different places. First, at Champaran in 1917 against the oppressive plantation, indigo plantation system. Then he also organized the Satyagraha movement in the favor of the peasants of Kheda, because the farmers were looking for a relaxation in the revenue payment, and there was also crop failures. And he had also organized the Satyagraha in 1917 in the Ahmedabad in cotton mill in the favor of the workers in backdrop of the poor working condition and low wages. And after getting success in all these satyagrahas, Gandhiji had got some encouragement, and he had got emboldened that he may organize the satyagraha at a large scale in India. And he got the chance because the Imperial Legislative Council had passed a Rolex Act, and the Rolex Act, which was also known as the Kala Kanun, had given immense powers in the hands of the Britishers to make imprisonment of any Indians in continuously for long 2 years without any charges. And all this Rolex Act was passed with the purpose, with one intention, that the growing discontent among the Indian people, which is going to be represent themselves in the form of movements, and here is the support of Mahatma Gandhi is also going to take place. So why should not the national movement, a rising national movement India, should be curbed in initial states? The political activists should be kept into the jail, and for this purpose he had the British Imperial Council has passed the Act, Rolex Act, which has given the power to make imprisonment of any Indian person, Indian political activist, for long 2 years in one stretch, and the person who was being kept under the jail had no any room to make appeal for the bail and to get released from the jail. Then Rolex Satyagraha was organized against the Rolex Act, and it was the nationwide Satyagraha, which had started from Hartal on 6th April 1920, and the rallies were organized in cities, and the shops were closed, and
The government was in fear that even the communication and telegraph system may be get disrupted. So the government started to clamp down on the against the Indians movement people, and there was also a police firing on a procession in Amritsar on 10th of April, and Mahatma Gandhi was barred to entering in the town, and there was the imposition of martial law in Amritsar, and people had gathered in Jallianwala Bagh to protest against the these types of such types of oppressive rule, and there was a organization of people in Jallianwala Bagh to participate in Baisakhi fair, but people had no any awareness that there is an imposition of martial law, and General Dyer had ordered the British troops to fire on these people, and thousands of people were killed, which was a very heinous act on the part of the Britishers. So, after occurrence of Jallianwala Bagh, now here is time to discuss about the Khilafat movement and non-cooperation movement. So, what is the meaning of Khilafat and non-cooperation movement, and what were the circumstances under which these movements were started after the occurrence of Jallianwala Bagh? Let us try to discuss it. Rolex Satyagraha had been a widespread movement. It was still limited mostly to the cities and towns. तो महात्मा गांधी के आने के बाद 3 सत्याग्रह, छोटे छोटे सत्याग्रह हुए, एक चंपारण में, दूसरा खेड़ा में, तीसरा कॉटन मिल अहमदाबाद में, और उसके बाद एक नेशन वाइड सत्याग्रह हुआ था प्रपोज रॉलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में। लेकिन ये जो रॉलेक्ट एक्ट सत्याग्रह था वो केवल शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट दैट नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इंडिया, और महात्मा गांधी का ऐसा विचार था कि अब पूरे देश के स्तर पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू किया जाए। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट्स कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। लेकिन महात्मा गांधी का ऐसा विचार था कि जब तक देश के सभी वर्गों, सभी समूहों को एक साथ लेकर अगर आंदोलन को शुरू नहीं किया जाएगा तो वो उतना मजबूत आंदोलन नहीं होगा, और उसमें वो मुस्लिम लोगों को भी इस अपने आंदोलन के साथ जोड़ना चाहते थे। एंड ही ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी। व्हाट वाज दैट अपॉर्चुनिटी? आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश had won, and there was a rumor that the British government was going to impose a harsh law against the Turkey government, and the head of the Turkey government used to be the head of the Muslim known as Khalifa. So if such circumstances were going to happen against the Khalifa of the Turkey, the head of the Turkey government, the Muslim community were likelihood to get angry. So Mahatma Gandhi and the two Ali brothers, Shaukat Ali and Muhammad Ali, tried to utilize this situation to make opposition of the such policy of the British government against Turkey. A Khilafat committee was formed under the leadership of Maulana Azad, Ajmal Khan and Harsat Mohani. A young generation of Muslim leaders like the Ali brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, also began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. तो तुर्की के खिलाफ जो एक बहुत ही कड़ा कानून लागू होने जा रहा था, और तुर्की का जो मतलब वहाँ की जो सरकार थी, जो उसका हेड था, वो खलीफा कहलाता था और पूरे मुस्लिम समुदाय का वो हेड होता था। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि मतलब मुस्लिम लोग इससे तो नापसंद नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं मुस्लिमों को अंग्रेजों के विरोध के लिए भी इस के लिए मतलब उनको उत्साहित किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, और हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ करके भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया जाए, और इसके लिए खिलाफत कमेटी भी बनी। इट वॉज ए मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली। खिलाफत मूवमेंट जो है वो अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया। द एम ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू तुर्की बाई ब्रिटेन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। The Turkish Sultan had the title of Khalifa. The Muslim considered him as an spiritual leader, so many Muslims joined this movement. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कड़ा कानून लागू की थी तुर्की के खिलाफ, और तुर्की का जो सुल्तान था वो मुस्लिम धर्म गुरु का हेड होता था, इसे खलीफा कहा जाता था, और मुस्लिम लोग इससे नाराज थे। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये खिलाफत मूवमेंट तो अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू किया गया, और ये जो शुरू हुआ था खिलाफत कमेटी के सहयोग से, और इस
कि उद्देश्य था कि तुर्की के खिलाफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कड़ा कानून लागू किया गया उसका विरोध करना। और इसी समय महात्मा गांधी ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने की सोची, क्योंकि उधर मुस्लिम भी विरोध करेंगे और इधर मतलब भारत के रेस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन वो भी विरोध करेंगे, और दोनों का जो आंदोलन एक साथ शुरू होगा ब्रिटिश के खिलाफ, तो ब्रिटिश लोग अपने को मतलब मुसीबत में समझेंगे और फिर वो भारतीय लोगों की बातें मानेंगे, भारत को आज़ादी देने के लिए प्रयास करेंगे। तो अब भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने के पहले जो सबसे पीछे मंशा थी महात्मा गांधी की, ही थॉट दैट व्हाई द ब्रिटिश एम्पायर हैज़ ग्रोन अप इन इंडिया एंड सर्वाइव्ड सो मेनी ईयर्स। किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य भारत में उदय हुआ और किस तरह से इतना सालों तक वो राज किया, उसके पीछे एक कारण जो है वो है भारतीयों का सहयोग। इफ द इंडियन पीपुल विड्रा बैक देयर कॉपरेशन, द ब्रिटिश एम्पायर विल कोलैप्स विद इन अ ईयर। अगर भारतीय लोग अपना ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों को सहयोग करना छोड़ दे तो ब्रिटेन साम्राज्य एक साल के अंदर ही ध्वस्त हो जाएगा। और इसकी पीछे उनका था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड इट विल अनफोल्ड इन अ डिफरेंट स्टेजेस। नॉन कॉपरेशन जो शुरू होगा और वो विभिन्न चरणों में होगा और उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य किया जाएगा। इसमें जो सबसे पहले था कि ये जो मूवमेंट शुरू होगा उसमें सबसे पहले सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पदवियाँ दी गई हैं, टाइटल दी गई हैं, उसका बहिष्कार किया जाएगा। फिर फॉरेन क्लॉथ्स का बहिष्कार किया जाएगा, फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया जाएगा। और जितने भी प्रोफेशनल्स है, चाहे कॉलेज टीचर हो, प्रोफेसर हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, वो कॉलेज का बहिष्कार करेंगे, वकील अपना कोर्ट्स का बहिष्कार करेंगे, और जितने भी वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, वो अपना फैक्ट्री कारखाने का बहिष्कार करेंगे। और धीरे धीरे इस तरह से बाइकाट एंड जो बहिष्कार की बात होगी उससे धीरे धीरे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। और अगर ब्रिटिश सरकार इस आंदोलन को रोकने का प्रयास करती है तो फिर सिविल डिसोबीडियंस, मतलब कि अब आज्ञा का उल्लंघन वाला भी एक आंदोलन शुरू किया जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया जाएगा। लेकिन ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे गांधी जी का विचार था कि सहयोग तो भारतीयों के द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी उसको तो समाप्त करना ही है, और उसके साथ साथ और सारे भी चीज़ें थी, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एडेड द मिजरी ऑफ द इंडियन पीपल, हेवी टैक्सेस, हाई प्राइसेस, फैमिन्स एंड एपिडेमिक्स मेड पीपल्स लाइफ मिजरेबल। दूसरा था रॉलेट एक्ट इन्वाइटेड लार्ज स्केल प्रोटेस्ट थ्रू आउट द कंट्री। Jallianwala Bagh massacre had taken and injustice was done to the Punjab and many Indian got angry. Muslim became unhappy to all the ill treatments of the Turkey. They started Khilafat Movement. The Congress session at Nagpur 1920 adopted Gandhi जी idea of non-cooperation. तो कांग्रेस की जो 1920 की जो मतलब सेशन थी उसमें ये डिसाइड हो गया कि अब नॉन कॉपरेशन शुरू करना है। बट मीनवाइल कांग्रेस के अंदर एक और चीज़ चल रही थी, वो क्या थी? फ्यू कांग्रेस मेंबर्स वेयर नॉट इन सपोर्ट ऑफ द बाइकाट ऑफ द काउंसिल इलेक्शन एज दे वांटेड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सिस्टम बीइंग इन पावर। तो उस इसमें ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल की मतलब चुनाव भी होने वाले थे, और कुछ लीडर्स का ये विचार था कि बाइकाट मूवमेंट की जगह पर चुनाव का बहिष्कार हम लोग नहीं करेंगे, चुनाव में भाग लेंगे और जीत कर जाएंगे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर ही अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और वहीं उसके अंदर रहते हुए भारत में संवैधानिक सुधारों की बात करेंगे। CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू अर्ज फॉर द ए रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी जो जैसे नेता थे उन्होंने एक अलग से स्वराज पार्टी बनाई और काउंसिल इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सम लीडर्स फियर दैट द मूवमेंट टू टर्न वायलेंट। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था कि ये मूवमेंट फिर बाद में वायलेंट हो जाएगा तो फिर इसका नुकसान ही होगा। सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के में कुछ घटनाएं हुई थी। क्या थी? खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म विथ लीडर्स सच एज मोहम्मद अली एंड शौकत अली in March 1919 in Bombay. Mahatma Gandhi in the Calcutta session of the Congress convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of the Swaraj in September 1919. तो कलकत्ता सेशन सितंबर 1919 में हुआ था और महात्मा गांधी ने देश के अन्य नेताओं को यह विश्वास दिलाया था कि हमें स्वराज के लिए पूरे भारतीय स्तर पर एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करना चाहिए। Non-cooperation program adopted by Congress on December 1920 at the Congress session at Nagpur. तो नॉन कॉपरेशन का जो एडॉप्ट था प्रोग्राम था वो नागपुर सेशन 1920 में लिया गया, लेकिन उसके पहले गांधी जी ने सितंबर में
कलकत्ता सेशन में सितंबर में मतलब सेशन हुआ था और इसमें स्वराज के लिए एक मूवमेंट शुरू करने की बात स्वीकार कर दी। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि नन कॉपरेशन भारत में क्यों शुरू हुआ और उसके पीछे क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे। अब हम लोग नन कॉपरेशन किस तरह से शुरू हुआ ये अगले चैप्टर में देखेंगे। ओके।